Hello students, a warm welcome and a very good evening to each one of you. I welcome you all once again to the session. In this session, we are about to discuss important questions that can be asked in CDS 1 2023. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में गाइस. वेलकम एवरीवन टू दिस पर्टिकुलर सेशन. इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो CDS क्वेश्चन टाइप्स जो CDS 1 2023 में आने के चांसेस हैं. सो वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू देयर. वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू देयर. सभी का स्वागत है. जय हिंद. सो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को. आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच वन ऑफ यू देयर. ठीक है, सभी का स्वागत है. ऑलराइट, नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस. ऐसे प्रैक्टिस सेशंस हम एग्जाम्स तक रेगुलरली लेके आते रहेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. Okay, we will be bringing such questions regularly till your exams. Okay, so in sessions को regularly follow करते चलिए. Here is the first question. Although it is a small town, but there are several local restaurants available. यहाँ पे आपको error identify करना है. You have to identify the error. Which part of the sentence do you think has an error? जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में. गाइस, थोड़ा सा वीडियो का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा खराब होगा जस्ट फॉर टुडे. I was trying to set that. Okay, by tomorrow it should be sorted. Do not worry about that. Okay, yes. गाइस, याद रखना जब भी सेंटेंस में ऑल्दो आता है, ऑल्दो के साथ कभी भी बट नहीं, बट आप लिखते हो येट. Although it is a small town, yet there are several local restaurants available. In fact, यहाँ पे yet की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉमा लिखा गया है. याद रखना जब भी सेंटेंस में although आता है, although के साथ हमेशा आप yet का प्रयोग करोगे या फिर although के साथ आप कॉमा लिखते हो. After although you use yet और you use a comma. इन दोनों में से कोई एक चीज़ आना चाहिए, दोनों नहीं आ सकता. ओके गाइज, गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं बता दूं आपका 7 बजे यूट्यूब पे सेशन होगा मेरा. 6 बजे यूट्यूब पे होगा और 7:30 बजे ऐप पे मैं लूंगा इंटरैक्टिव क्विज एज वेल. तो गोइंग फॉरवर्ड जैसे हम पहले करते थे वो चीज़ रेगुलरली स्टार्ट हो जाएगा. डू नॉट वरी. सो बी पार्ट में एरर है. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से पढ़िए. टेल मी विच पार्ट हैज द एरर. Sunny would have been a more wiser choice and far more beautiful. Which part of the sentence has an error? बताइए. ओके, याद रखना कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप डबल कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं यूज कर सकते. यू कैन नॉट यूज डबल कंपैरेटिव्स इन अ सेंटेंस. यह एडजेक्टिव का रूल है. यू कैन नॉट यूज डबल कंपैरेटिव. सो सनी वुड हैव बीन अ मोर वाइजर चॉइस नहीं लिखोगे. वाइजर इटसेल्फ इज अ कंपैरेटिव डिग्री, तो हम मोर का प्रयोग नहीं करेंगे. यू सिंपली से सनी वुड हैव बीन अ वाइजर चॉइस एंड फार मोर beautiful. So error is in part B. Whoever said that was correct. Well done. अगला सवाल ये रहा. Read this carefully and tell me which part has the error here.
ओके, एक रूल मैं बता दूं, यहां पे प्रेपोजिशनल एरर है। आप सभी को पता होगा कभी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हो। आफ्टर अ प्रेपोजिशन वी ऑलवेज यूज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओनली। सो द कपल हैज 3 चिल्ड्रन, टू ऑफ हु नहीं, आप लिखोगे टू ऑफ whom were adopted. Two of whom. Error is in part B. Whosoever said that was absolutely right. Well done. B part. Okay. Next question. Identify the error. Okay. बता दूं यहां पे who अगर आप लिखते हो, अगर आप who लिखते हो तो that is a subjective pronoun. who क्या है? Subjective pronoun. लेकिन अगर आप whom लिखते हो this is objective pronoun. और preposition के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, that's the reason we are writing whom over here. Pretty simple. Next question. She gave him all the money which she had. कौन से पार्ट में एरर है बताइए? गाइज ये सेशन थ्रू आउट दिस वीक 7 बजे से 9 बजे चलेगा। पूरे वीक 7 बजे से 9 बजे ये सेशंस चलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस जो आपके सीडीएस एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। ये रेगुलरली 7 से 9, दिस वीक इट विल बी 7 to 9। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जैसे मैंने आपको बोला 6 बजे यूट्यूब पे एंड 7:30 बजे ऐप पे इंटरैक्टिव क्विज। सो आई विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टिल योर एग्जाम्स। ओके, नाउ आपको ये रूल पता होगा गाइस, कभी भी सेंटेंस में ऑल आता है, सम आता है, सेम आता है, सम में समथिंग, समबडी, समवन, ओके, नथिंग, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ठीक है, या सेम आता है, ऑल आता है, या सुपरलेटिव डिग्री आता है। ऐसे केसेस में रिलेटिव प्रोनाउन आप दैट का प्रयोग करते हो और यहां पे ऑलरेडी ऑल लिखा हुआ है। सो शी गेव हिम ऑल द मनी विच शी हैड नहीं, आप लिखोगे दैट शी हैड। सो एरर इज इन पार्ट सी। whosoever said C was absolutely right. Well done. अगला सवाल ये रहा, ध्यान से पढ़ो एंड टेल मी विच पार्ट हैज द एरर। शुड बी अ सिंपल वन फॉर यू। Okay, let's see. A few people have answered this correctly. Let I नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे let me. Let me read the newspaper if you finished with it. Error is in part A. याद रखना कभी भी सेंटेंस में let आता है तो let के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लगाते हो। After let you always put objective pronoun. Okay, ये कैसे सेंटेंस हैं? इन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे अगर मैं कहता हूं सिट डाउन, सिट डाउन में सब्जेक्ट कौन है? व्हाट और हु इज द सब्जेक्ट व्हेन आई से सिट डाउन? द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, द सब्जेक्ट इज यू। ओके, द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, तो आपको यू क्लियरली लिखने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट हैव टू राइट द सब्जेक्ट यू क्लियरली। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं लेट, लेट आई गो या लेट मी गो, क्या लिखोगे? अगेन समझिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलरेडी हिडन है विच इज यू। दिस द सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया वर्ब। व्हाट इज लेट? लेट इज द वर्ब, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। सो यू कैन नॉट से लेट आई गो, यू शुड से लेट मी गो। ओके, आफ्टर अ वर्ब यू पुट द ऑब्जेक्ट। सो लेट मी गो इज करेक्ट। अगला सवाल ये रहा, we will know to live our lives to the best, maximize any and all factors. यहां पे and आना चाहिए। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? व्हाट डू यू थिंक?
इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट गाइस, मैंने पहले भी बताया है, कभी भी सेंटेंस में नो आता है, टीच आता है या लर्न आता है, whenever a sentence has no, teach or learn, इसके बाद आप हमेशा क्या लगाते हो, you put the WH word और उसके बाद लगाते हो 2 plus V1. So we will know how to live. We will know how to live our lives to the best and maximize any and all factors. तो यहाँ पे नो के बाद हाउ टू लिखना जरूरी है. नो, टीच या लर्न के बाद हाउ टू या व्हाट टू, हाउ टू प्लस V1, व्हाट टू प्लस V1, वेयर टू प्लस V1, कोई ना कोई WH वर्ड आएगा. डू यू नो टू ड्राइव, गलत. डू यू नो ड्राइविंग, गलत. डू यू नो हाउ टू ड्राइव इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग द सेंटेंस. डू यू नो हाउ टू ड्राइव इज द करेक्ट वे. सो एरर कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट. एब्सोल्युटली राइट, वेल डन. अगला सवाल ये रहा. We, accompanied by Miss Sullivan, was there at the wedding in October 1894. Which part do you think has the error here? या अंकित, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है. We, accompanied by Miss Sullivan, was there. यहां पे गौर करो, द सब्जेक्ट इज वी, accompanied by Miss Sullivan, this is actually a phrase. So we अगर सब्जेक्ट है and we is the subject and it is obviously in the plural, तो यहां पे was नहीं, आप लिखोगे were there at the wedding in October 1894. So error कौन से पार्ट में आएगा? Error is in part B. Okay, pretty simple. अगला सवाल ये रहा. Then he told her all which had happened. अभी कुछ देर पहले ही ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, so you should be able to answer this well. बताइए क्या होना चाहिए. मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि all जब भी आए सेंटेंस में आप which नहीं क्या प्रयोग करोगे? All that. Then he told her all that had happened. Error is in part B. B is absolutely right. Good. Agla question. He did not know who to answer and for a few seconds collected his thoughts. कौन से part में error है? बताइए. He did not know who to answer and for a few seconds collected his thoughts. He did not know who नहीं आप लिखोगे. He did not know whom to answer और he did not know what to answer. Okay? उसे नहीं पता किसे आंसर करना है उसे. तो either you say whom. He did not know whom to answer. उसे नहीं पता था कि किसे आंसर करना है या उसे नहीं पता था कि क्या आंसर करना है. He did not know whom to answer और he did not know what to answer. And for a few seconds collected his thoughts. So yes, error is in part B. Okay? Next question, here goes. Which part do you think has an error here? Both he and his mother seemed well informed and intelligent. Right. The sentence is absolutely correct. There is no error in this sentence. Both he and his mother seemed well informed and intelligent. No error in this sentence. Sentence is absolutely correct. Well done. Agla sawal. I have been made acutely aware of that fact since I was a child.
ओके, बता दूं इस सेंटेंस में भी देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस वाज अ गुगली. I have been made acutely aware of that fact since I was a child. There is no error, sentence absolutely fine. Pretty good. Okay, अगला सवाल. I let the dog out of the bag about their wedding plans. यहाँ पे एक idiom based error है. What is the idiom? Okay, the correct answer is I let the cat out of the bag about their wedding plans. If you're saying letting the cat out of the bag, let the cat out of the bag, ये एक idiom है. इसका मतलब क्या होता है? Let the cat out of the bag का मतलब होता है disclose a secret. Disclose a secret, that is letting the cat out of the bag. So yes, error is in part A. Okay, उसने वेडिंग प्लान्स के बारे में सीक्रेट जो है बात उसने डिस्क्लोज कर दिया, रिवील कर दिया. दैट इज लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग. अगला सवाल. आई आस्क्ड हिम इफ ही एवर विश टू राइट हिज थॉट्स डाउन. Which part do you think has the error here? Okay, there is no error, sentence is absolutely fine. I asked him if he ever wished to write his thoughts down. गाइस याद रखना, एग्जाम में कई लोग हिचकिचाते हैं नो एरर आइडेंटिफाई करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए. जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर हो. ओके, आस्क योरसेल्फ इफ यू हैव रिवाइज्ड इनफ, आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू इजीली आंसर. लेकिन if your gut feeling says that there is no error, sentence seems to be absolutely fine, okay, that only comes with sufficient practice. So आप no error भी identify मतलब select कर सकते हो, no problem. There could be questions where there are no errors in the sentence. Think twice. हमेशा part में sentence को देखिए and try to identify. Now the basic tip is or the trick is, फर्स्ट आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. जो भी सेंटेंस दिया है उस मीनिंग को पहले आइडेंटिफाई करिए एंड देन गो अहेड एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरर. बट द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल. क्वेश्चन को ध्यान से समझना जरूरी एंड देन अप्लाई द कॉन्सेप्ट. इट इज नॉट नॉर्मल टू प्रेफर वन चाइल्ड देन अनदर. कौन से पार्ट में एरर है बताओ. Okay, I'm sure if you've been following my sessions earlier, you must be aware of this particular concept. It is not normal to prefer one child than नहीं आप लिखोगे to another. It is not normal to prefer one child to another. Error is in third part. There are a few words that always take the preposition to. ये कौन कौन से हैं? Senior, junior, superior, inferior, elder, prior, prefer and preferable. I'm sure you must be aware. ये कुछ ऐसे words हैं जो हमेशा preposition to ही लेते हैं. They always take the preposition to along with it. ठीक है, मजा आ रहा है. अगला सवाल ये रहा. Read the question, tell me which part has the error. Guys, I'm sure you people missed us all the faculties, क्योंकि आपके सेशंस बीच में थोड़े से स्थगित हो गए थे ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस. बट डू नॉट वरी, अब एग्जाम तक रेगुलरली सेशंस लाऊंगा और आई विल बी ब्रिंगिंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर यू. ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका फ़ायदा होगा.
प्रियंका, ओवर कभी भी यूज नहीं होता प्रेफर के साथ। ये जो तमाम शब्द मैंने आपको बताया, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, दे ऑलवेज टेक द प्रेपोजिशन टू। कई बार लोग स्पोकन इंग्लिश में बोल देते हैं ही इज सीनियर देन मी और ही इज जूनियर देन मी, जो कि गलत है। सीनियर टू, जूनियर टू, ओके, याद रखना इस चीज को। ओके, इस सेंटेंस में कई लोगों ने सही आंसर दिया। एरर इज इंडीड इन पार्ट सी। आई शो यू वेयर कैन यू स्लीप नहीं, आई शो यू वेयर यू कैन स्लीप। आई शो यू वेयर यू कैन स्लीप, यू कैन नॉट से कैन यू स्लीप। कैन यू स्लीप जो है वो एक सवाल की तरह लगता है। ओके, सो आई शो यू वेयर यू कैन स्लीप। एरर इज इन पार्ट सी। अब आते हैं थोड़े से नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बिल्कुल अंकित, ऐप पर फ्री सेशंस होंगे। आपको याद होगा प्रीवियस प्लेटफॉर्म में जैसे हमने इंटरैक्टिव क्विज में लेके आता था आप लोगों के लिए, वैसे ही इंटरैक्टिव क्विज मैं नेक्स्ट वीक से ऐप पर लेके आऊंगा। इस वीक में पूरी तरह हम यूट्यूब पे ही करेंगे, बट नेक्स्ट वीक 7:30 to 8:30 आपका ऐप में चलेगा, 6 to 7 आपके यूट्यूब में चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपके लिए लेके आने वाले हैं हम सभी के टाइमिंग्स याद रखना, अलग अलग फैकल्टीज़ के कौन से टाइम में आएंगे। आई एम श्योर दे मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड यू। अभी से मैं बता देता हूँ के एंड वील अपडेट यू ऑन द टेलीग्राम ऐप एज वेल। ऑब्वियसली आप मेरे टेलीग्राम ऐप में तो जुड़े ही हो, लेकिन टेक्स्ट बुक का जो टेलीग्राम ऐप है जिसमें आपको अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, वो आपको इस वाले एड्रेस पे मिलेगा। @IRSir_TV सर्च करोगे एंड ज्वाइन दैट ग्रुप, उसमें आपको अपडेट्स मिलेंगे मेरे सेशंस के बारे में। चलो जी, नरेशन। The old man of Latur said, "Alas, my only son is dead." You have to change the sentence to the indirect speech. क्या होना चाहिए बताओ? जब भी alas आता है, which expression does it denote? जब भी सेंटेंस में alas आता है, I'm sure you must be aware, alas आने पर it shows depression, sorrow or sadness. सो टोल्ड तो लिख नहीं सकते आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सप्रेस्ड विथ एंग्विश ये भी नहीं लिख सकते हो। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो बिल्कुल लिख सकते हो एक्सक्लेमेटरी में। दैट इज ओनली सन वॉज डेड, सो यस, सी इज एब्सोल्युटली राइट। द करेक्ट आंसर इज सी। डी क्यों गलत है? द ओल्ड मैन ऑफ लातूर सॉरोफुली नरेटेड दैट हिज ओनली सन वॉज डेड। ऐसे करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं लिखते। एक्सक्लेमेटरी में आप लिखते हो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो या एक्सक्लेम्ड सैडली, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। दैट्स द रीजन सी इज करेक्ट, नॉट डी और बी और एनी अदर ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा, आई सेड टू हिम ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम। विच इज द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दिस वन? गाइस, छोटी छोटी चीजों को अगर ख्याल रखते हो तो तुरंत आप आंसर कर सकते हो। ओके, जैसे ही यहां पे विल लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा वुड, जिसका मतलब ए और बी को हमने हटा दिया, सी और डी। ओके, कन्फेस हो जाना चाहिए कन्फेस्ड, तो दोनों में ही कन्फेस्ड है। दोनों को पढ़ के देख लो। आई टोल्ड हिम that all his faults would have to be pardoned. have to be कैसे आ गया? ये गड़बड़ है, इसलिए C को भी हटाया। The correct answer is D. I told him that all his faults would be pardoned if he confessed them. Okay, would be pardoned if he confessed them. So yes, D is absolutely right. GK की क्लास 6 घंटे की हुई थी सचिन, बट उसको अपडेट होने में यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो थोड़ा सा वेट करिए। वंस इट्स अपडेटेड आप शरद सर, आकाश सर और श्वेता मैम तीनों का ही सेशन आप देख सकते हो। तीनों का मिला के अराउंड 6 आवर्स का सेशन हुआ था आज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गोज।
He said it used to be a lovely quiet street. क्या होना चाहिए इसका आंसर? Indirect speech. Okay, the correct answer to this particular question is C. He said that it used to be a lovely quiet street. जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ्स की पास्ट में भी बात करते हो, आपको ये चीज याद होगा, whenever I talk about universal truths or facts or habitual facts, ऐसे केसेस में हमेशा टेंस सेम रहता है, चेंज नहीं करते. So he said that it used to be, इसको had used नहीं करेंगे. He said that it used to be a lovely quiet street. So yes, C is absolutely right for this one. यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हैबिचुअल फैक्ट्स और फैक्ट्स का टेंस हमेशा सेम रहता है, आप चेंज नहीं करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता सेड आई डिड नॉट से दैट. व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दिस वन? Okay, the correct answer is Amrita said that she had not said that. Did not say. Simple past किस में change होता है? Past perfect tense में. Simple past will change to past perfect tense. Amrita said that he had not said. She has not said that. B is absolutely correct. Rohit, beta, do not worry. I know that some people have actually taken subscriptions or courses on an academy due to specific faculties. मैं जानता हूँ आप लोगों को कंसिडर करते हुए जो बन पाएगा अपने हिसाब से हम करेंगे. ये चीज़ के बारे में मैंने सभी फैकल्टीज़ और अपने टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट से डिस्कस किया है. वंस आई गेट अ रिवर्ट आई कैन इन्फॉर्म यू. सो रोहित, बिल्कुल चिंता मत करिए. आई विल इंश्योर दैट आपको दोबारा पेमेंट ना करना पड़े एंड यू एक्चुअली गेट द एक्सेस टू आवर कोर्सेज. ओके, क्या होगा उसका प्रोसीजर, कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा आगे के सेशंस में. ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अगर अन अकेडमी में किसी स्पेसिफिक फैकल्टीज के कारण ये किया है, तो यू कैन रिवर्ट एंड वील सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू फॉर श्योर. ओके, आगे चलते हैं. वेयर हैव यू स्पेंट योर मनी, ही आस्क्ड हिम. वेयर हैव यू स्पेंट योर मनी, ही आस्क्ड हिम. इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होना चाहिए? अगेन, सिंपल पास्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. तो हैव यू स्पेंट विल चेंज टू हैड स्पेंट. एक ही ऑप्शन में है हैड स्पेंट. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ही आस्क्ड हिम वेयर ही हैड स्पेंट हिज मनी. He asked him where he had spent his money. Is that clear? Pretty clear to all? Guys, एक चीज बता दूं, अभी यहां पे आके ये मत पूछना कि सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है. मैं ऊपर से तो कॉन्सेप्ट अभी आपको बता रहा हूं. ये जो तमाम सेशंस हैं गाइस, दिस इज for aspirants who are about to take the CDS exams next month. जो अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है, उस एग्ज़ाम को जो अभी देने वाले हैं उन्हीं के लिए है. सो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस सेशंस ला रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाएगा. एट द सेम टाइम आप एक टाइम्ड हिसाब से क्वेश्चंस को टाइम रहते कंप्लीट कर सको, ये भी हमारा फोकस है. तो उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ. सो प्रैक्टिस सेशंस बहुत ज़रूरी है, आई नो, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. लेटेस्ट पैटर्न वाले भी करवाने वाला हूँ. अगला सवाल ये रहा. ही सेड आई डोंट नो वेयर माई ग्लव्स आर. व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच?
For people who are preparing for the September course, September एग्जाम, वो लोग हमारा सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं. यू कैन यूज दिस कोड जोश विच इज JOSH to avail additional discount as well. Link is there in the description box below. Okay, and we will be starting specific courses for you very soon. Okay, he said I don't know where my gloves are. Don't is simple present tense. इसका simple past होना चाहिए. He said that he did not know where his gloves were. So yes, the correct answer is B. He did not know. Simple present changes to simple past. तो इसमें सिंपल प्रेजेंट ही रह गया, गलत. इसमें भी सिंपल प्रेजेंट ही रह गया, गलत. ही सेड दैट ही डिडंट नो अबाउट हिज ग्लव्स, यहां पे गड़बड़ है, तो डी भी गलत. करेक्ट आंसर इज बी. ओके, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर गोस. ध्यान से पढ़ो एंड टेल मी which should be the indirect speech. She said to the interviewer, could you please repeat the sentence? सबसे पहले तो बता दूं, जब भी सेंटेंस में कुड या वुड लिखते हो आपको प्लीज लिखने की जरूरत ही नहीं है. जब भी सेंटेंस में कुड या वुड लिखते हो आपको प्लीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुड या वुड सारा, कुड और वुड ये दो जो मॉडल्स हैं क्वेश्चन में लिखने टाइम दे शो पोलाइटनेस. वो खुद ब खुद पोलाइटनेस दिखाते हैं या विनम्रता दिखाते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. एनीवेज, व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच? द इनडायरेक्ट स्पीच शुड बी ए. इंडीड, शी रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द सेंटेंस. शी रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द सेंटेंस. सो करेक्ट ए इज एब्सोल्युटली राइट. अगला सवाल. द मूवी बिगैन एट 6 o'clock, अमृता सेड. व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच? The correct answer to this question should be C. The movie began at 6 o'clock, Amrita said. Amrita said that the movie had begun. Began simple past will change to past perfect. So began क्या बन जाता है? Had begun बन जाता है. Had begun at 6 o'clock. So yes, that is absolutely right. Well done. अगला सवाल. Where is your friend? He asked me. What should be the indirect speech? Where is your friend? He asked me. Indirect speech for this one. Okay. The correct answer, where is your friend, इसका होना चाहिए he asked me where my friend was. कई लोगों को लग सकता है ऐसे होना चाहिए he asked me where was my friend, जो कि गलत है. इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखो हमेशा फुल स्टॉप लिखा जाता है विच इज एक्चुअली अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में हमेशा आप वर्ब को एंड में लिखोगे. हाउ वॉज करके आप इंटरोगेटिव फॉर्मेट में नहीं लिख सकते. He asked me where my friend was. A is absolutely right. अगला सवाल. I don't speak Spanish, अमूल्या said. Indirect speech बताओ इसका. The correct answer is indeed A. Amulya said that she didn't speak Spanish. Simple present will change to simple past. Amulya said that she didn't speak Spanish. Agla sawal. He said, I intend to leave for Delhi tonight. Indirect speech batao.
Okay, the correct answer to this question should be indeed A. He said that he intended to leave for Delhi that night. He said that he intended to leave for Delhi that night. A is correct. अगला सवाल, Ritu said Tanuja has a fine picture. Ritu said Tanuja has a fine picture. Indirect speech क्या होना चाहिए बताइए. सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तनुजा हैज विल चेंज टू सिंपल पास्ट. यहाँ पे प्रेजेंट ईयर आ गया, यहाँ पे प्रेजेंट रह गया, यहाँ वुड आ गया. द करेक्ट आंसर इज इंडीड डी. रितु सेड दैट तनुजा हैड अ फाइन पिक्चर इज करेक्ट. अगला सवाल ये रहा. आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर बुक फॉर वन डे. व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दिस वन. Should be an easy one indeed. The correct answer is B. I asked my friend if I could borrow his book for one day. Can I borrow? Can will change to could. इसमें could हो रहा है, इसमें could हो रहा है, इन दोनों में can हो रहा है, तो इसको तो ऐसे ही हटा दो. आप सभी को पता होना चाहिए कि can will change to could. I asked my friend if I could borrow your book. Your कैसे आया? मैं तो दोस्त से पूछा, तो your कैसे आ जाएगा? दोस्त से पूछा तो क्या लिखोगे? His. I asked my friend if I could borrow his book for one day. Yes, B is correct. Next question. Angad said honesty is the best policy. Again, गौर करिए, this is a universal truth or a fact or a proverb which are generally truths. इसका indirect speech क्या होना चाहिए? Okay, the correct answer to this one is indeed A. Angad said that honesty is the best policy. Okay, a proverb which is actually a fact. So yes, A should be the correct answer. इसको past में आप change नहीं कर सकते. अगला सवाल. He said, has anybody been unkind to you? Indirect speech. Has anybody been unkind to you? What should be the indirect speech? You किसके लिए? Second person. Object के हिसाब से change होता है. तो he asked me if anybody had been unkind to me. D is correct. Second person दिया नहीं है तो मैं अपने आप को ही by default मान लूंगा ऐसे cases में. So yes, the correct answer is D. Okay, good. Now let's attempt a few fill in the blanks questions. Direction क्या कह रहा है देखो. Choose an appropriate word from the options to suitably fill the blank in the sentence below so that the sentence makes sense, both grammatically and contextually. Question कह रहा है they dash learning a new language next semester. Will have, will be, will have been. What should be the answer? Okay, the correct answer is, most of you are right, they will be learning a new language next semester. Will be learning. अगले सेमेस्टर में वह एक नई भाषा सीख रहे होंगे. So yes, sentence is in future continuous tense. Next question. The hit TV serial has ultimately boiled dash to a family drama and has disappointed many of its followers. Under, up, in or down?
Okay. Boiled down to, yes, D is correct. The hit TV serial has ultimately boiled down to a family drama. TV serial तो hit था, but ultimately what has it resulted in? Okay, consequently वो क्या बन गया? It has become a family drama, और इसके कारण कई सारे उसके followers और viewers disappointed हो गए. पहले तो interesting था, but ultimately वो एक family drama बन के रह गया. That's the meaning of the sentence. अगला क्वेश्चन. His moods flipped back and forth so fast it was hard to know how he would dash to anything. क्या होना चाहिए बताइए. Okay. Chaliye, let's see. The correct answer to this one should be A. His moods flipped back and forth so fast it was hard to know how he would respond to anything. बहुत मुश्किल था कहना कि वो कैसे respond करेगा. Okay. Retaliated is an action which is done in return. So वो retaliated है. Tit for tat. कोई चीज किसी ने आप पे कोई मतलब आपसे कोई दुश्मनी निकाली, अटैक किया और आपने रिटेलिएट किया, दैट इज रिटेलिएट. बट यहाँ पे रिटेलिएट अप्रोप्रिएट नहीं होगा. रेस्पॉन्ड टू एनीथिंग इज करेक्ट. गेटिंग डिस्कवर हो नहीं सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन. माई हार्ट डैश अ बीट व्हेन अ पैकेट ड्रॉप फ्रॉम द एयर, जस्ट मिस्ड अ सीनियर सिटीजन, हॉप्ड, स्किप्ड, लीप्ड और जंप्ड. क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शंस. Okay, the correct answer is yes, B, skipped a beat. My heart just skipped a beat when a packet dropped from the air, just missed a senior citizen. अचानक से आपको एक प्रकार से क्या कहते हैं, डर लगना. ओके, योर हार्ट स्किपिंग अ बीट का मतलब अचानक से किसी बात पे आपको डर लगना, बट देन इट ग्रेजुअली सबसाइड्स. ओके, मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो, अचानक से गाड़ी आपके सामने आई, योर हार्ट विल स्किप अ बीट, आप डर जाओगे, उसको आप कहते हैं. ओके, सो हार्ट स्किपिंग अ बीट मीन्स टू बी स्कैर्ड सडनली, अचानक से डर जाना किसी चीज के बारे में. प्रेफर के साथ टू आता है, बिल्कुल सही रिंकू, प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है. By dash carefully, you'll understand the instructions. यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए. By dash carefully, you'll understand the instructions. Listen, listened, listening or to listening. Okay, the correct answer is C. By listening carefully, you'll understand the instructions. By listening carefully, you'll understand the instructions. C is correct. Well done.
अगला सवाल, द रिपोर्ट इज ड्यू डैश वेंसडे एंड हेंस आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है डिले कर रहा हूं, डिले कर रहा हूं। द रिपोर्ट इज ड्यू डैश वेंसडे, क्या लिखोगे? The report is due on Wednesday. Absolutely right. Whenever you talk about days or dates, on कब लिखते हैं? When we talk about days or we talk about dates. वहीं पे in कहाँ लिखा जाता है? When we talk about months or we talk about years. Okay, in January, in February, in March, in 2005, in 1995. But dates के साथ on Sunday, on Monday, on Tuesday, on the 23rd, on the 5th, on the 6th, etc. So A is right. Next question. It has been recommended to dash hand frequently throughout the day. Washing, wash, washed or be washed. 4 options. अंकित, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा। ओके, अभी एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस 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 ही होना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी लाऊंगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस भी लाऊंगा। आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ज़्यादा वैरायटी मैं लेके आऊंगा एग्जाम तक। It has been recommended to, yes, the correct answer is wash hands frequently throughout the day. It has been recommended to wash hands. Recommended to wash is correct. Pretty simple. Agla sawal. Finland becomes the first country to dash 7 months of parental leaves for both parents. Regulate, allowed, introduce or commence. क्या होना चाहिए बताओ? I'm talking about the first country. कोई चीज कहीं पे पहली बार हो रहा है तो वो क्या होगा? Okay, the correct answer to this particular question is C. Finland becomes the first country to introduce 7 months of parental leaves for both parents. It has become the first country to introduce. Finland becomes the first country to introduce 7 months of parental leaves for both parents. Simple. Regulate का मतलब होता है to keep something under control. Allow मतलब अनुमति देना. Commence मतलब continue करना. So, यहाँ पे पहला कंट्री है तो it is introducing parental leaves for both parents. So yes, C is correct. अगला सवाल ये रहा. Phobic reactions are strong. Dash fears of specific objects or situations. Injurious, irrational, infinite, expensive. Phobic reactions बहुत ज़्यादा strong होती हैं और यह होता क्या है? Dash fears of specific objects or situation. Injurious fears, हानिकारक डर. इरेशनल फियर्स, इरेशनल मतलब बिना लॉजिक के, ओके, बिना किसी तुक के डर, मतलब आप समझ नहीं पाते हो. इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत. एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा. तो क्या होना चाहिए बताओ? द करेक्ट आंसर इज यस, इंडीड बी, irrational fears. Phobic reactions are strong. Irrational fears of specific objects or situations. Irrational, something that does not make sense at all. That is irrational, illogical. Phobia क्या होता है? एक प्रकार का डर. कुछ लोगों को किसी अजीबोगरीब चीजों से फोबिया होता है, डर होता है, जो आप सोचोगे यार इससे कौन डरता है. जैसे कुछ लोगों को छिपकली से डर लगता है, लिजर्ड से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है. लेकिन कुछ लोग होते हैं कि छिपकली को हाथ में भी पकड़ सकते हैं.
जो हाथ में पकड़ सकते हैं उनको लगेगा कि यार ये लोग जो डर रहे हैं इसका कोई तुक ही नहीं बनता, मैं तो आराम से खेलता हूँ उसके साथ। तो उसको हम कहते हैं इरेशनल फियर्स। ओके, समथिंग जो अगले को लगे कि नहीं इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे कई लोगों को बंद जगहों से डर लगता है, जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। खुले जगहों से डर लगता है, उसको एगोराफोबिया कहते हैं। कि कुछ लोगों को खून से डर लगता है, उसको हेमेटोफोबिया कहते हैं, हेमोग्लोबिन से आया शब्द। तो कई सारे ऐसे फोबियाज हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आते हैं। आई बी ब्रिंगिंग सच सेशंस, आगे ये भी मैं लेके आऊंगा। हाँ, अंधेरे से डर लगना, तुषार, उसे हम कहते हैं अंधेरे से डर, उसको हम कहते हैं निक्टोफोबिया। बचपन से नहीं, बच्चों से जनरली होता है तो पीडोफोबिया कहा जाता है अंकित उसे। ओके, अगला सवाल। माई मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स बाय डैश कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, पोरिंग ऑफ, पोरिंग एंड, पोरिंग और पोरिंग टू। क्या होना चाहिए बताइए। नमन, वाटर से फियर उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, स्पेसिफिक टर्म फॉर दैट। ओके, माई मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स बाय पोरिंग अ cold glass of water. C is absolutely right. Pouring a is right. My morning routine starts by pouring a cold glass of water. C. अगला सवाल। अब आते हैं, हम करेंगे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जहां पे आपको एक पैसेज पढ़ना होगा और उस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो सभी लोग पहले पैसेज को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद हम चलते हैं पैसेज के क्वेश्चंस पर। पैसेज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उस पे हम चलेंगे। सो फटाफट सभी लोग पढ़ो, समझो, देन लेट मी नो एंड देन वी शैल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ये पहला पैराग्राफ है, इसको पढ़ के मुझे कमेंट करिए कि रेड इट या डन या थम्स अप का मार्क दीजिए ताकि मैं स्लाइड को चेंज कर सकूं। पढ़ लिया? ओके। It says, when what is now the iconic emblem of extinction finally kicked the bucket, nobody noticed. At that time, around 1662, probably the year a dodo was last seen in the wild, the idea that the entire species could be wiped out had never occurred to anyone. Pre-Darwinian biology was enthralled to the idea that animals and plants were perfect and eternal designs of the Creator. अब सभी को पता है एक्सटिंक्शन का जो लोगो होता है, जो एम्ब्लेम होता है, उसे हम कहते हैं डोडो। डोडो एक प्रकार का पक्षी था जो एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया। कब? 1662 में, तभी लास्ट देखा गया था उसे, उसके बाद देखा नहीं गया। लेकिन जब इसे क्यों उसका एम्ब्लेम या उसका चिन्ह क्यों बनाया गया है, एक्सटिंक्शन का, विलुप्ति का चिन्ह ये डोडो क्यों है? क्योंकि 1662 के पहले किसी ने भी इस बात को नहीं सोचा था कि किसी भी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी पूरी तरीके से वाइप आउट या विलुप्त हो सकता है। किसी ने ये चीज नहीं सोचा था। लेकिन डोडो के विलुप्त होने के बाद ये लोगों को लगा कि नहीं, ऐसी स्पीशीज या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी तरीके से विलुप्त भी हो सकती हैं। ये डोडो के एक्सटिंक्शन के बाद लोगों को रियलाइज हुआ। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। Read this and then we'll move on to the questions.
66 मिलियन लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा टेक्स्ट आपका छुप रहा होगा, दैट इज 66 मिलियन। ओके जी, पढ़ लिया सभी ने? ऑलराइट, गुड। It says disbelief certainly greeted French naturalist Georges Cuvier in 1796 when he suggested that mammoth, mastodon and giant sloth bones were remains of animals that had died out. Nonsense, snorted the establishment. They were simply living animals that had moved elsewhere. It took time for Cuvier's killer argument that if these huge beasts were still around, someone would have seen them to win out. So, लोग नहीं मानते थे कि कोई स्पीशीज पूरी तरीके से विलुप्त या एक्सटिंक्ट हो सकता है। डिसबिलीफ सर्टेनली ग्रीटेड फ्रेंच नेचुरलिस्ट जॉर्जेस कवियर जो हैं, वो पहली बार 1796 में उन्होंने बोला कि मैमथ, मैस्टोडोन और जायंट स्लॉथ बोन्स जो पाए गए थे वो ऐसे प्रजातियों के थे जो ऑलरेडी विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन कई लोगों ने, बहुत लोगों ने इसे विश्वास किया ही नहीं। ओके, उन्होंने बस ये सोचा कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, ये किसी के दिमाग में नहीं आया था। ओके, लेकिन जॉर्जेस कुवियर का एक किलर आर्ग्यूमेंट था कि अगर ये कहीं ना कहीं होते या दूसरी जगह मूव भी किए कर गए होते तो इतने बड़े बीस्ट थे, दे वर ह्यूज बीस्ट, कि किसी न किसी ने तो पक्का उसे देखा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी ने भी नहीं देखा है। तो ये जॉर्जेस कुवियर का आर्ग्यूमेंट था। आगे देखो क्या कह रहा है, where there is life there is extinction. The fossil record tells us that more than 99% of species that have ever lived are no longer with us. Okay, 99% जो स्पीशीज हैं वो हमारे साथ अभी नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं। Biologists estimate a background rate of about 1 extinction per million species per year, caused by disease, predation, environmental change, and things simply evolving into another things. Okay, कई बार ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं डिजीज के कारण, लोगों के पोचिंग, प्रेडेशन के कारण, एनवायरमेंटल चेंज एंड थिंग्स सिंपली इवॉल्विंग इनटू अदर थिंग्स। कुछ इवॉल्व करके दूसरी चीज बन जाते हैं, पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए वो प्रीवियस स्पीशीज का एक्सटिंक्ट हो जाता है। मोर ड्रामेटिक आर 5 मास्ट एक्सटिंक्शंस डॉक्यूमेंटेड इन द फॉसिल रिकॉर्ड। During each, more than 3/4 of the planet's species were lost in just a million years or so. Most recently, around 66 million years ago, in the event that did for the dinosaurs. Pretty simple. Yeah, predation means hunted down. Poach karna. Okay, here's the first question. Which one of the species is not the reason for the extinction of species? Which one of the following is not the reason for extinction of species? इनमें से कौन सा रीजन नहीं था किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने का? Which of these is not a reason? Disease, predation, environmental change or suicide? Pretty simple one. D, absolutely right. Suicide is not the reason for these species to get extinct. यह उनमें से रीजन नहीं था, जो मेंशन्ड भी नहीं है पैसेज में। अगला सवाल, अराउंड विच ईयर अ डोडो वाज सीन इन द वाइल्ड? कौन से साल में डोडो को वाइल्ड में देखा गया था? दैट्स द क्वेश्चन। Okay, it's pretty simple, was clearly mentioned in the passage. The correct answer is indeed D. It was in 1662 that the dodo was seen in the wild. Is absolutely correct. Good. Agla sawal. When did the last mass extinction happen?
मास एक्सटिंक्शन कब हुआ था लास्ट? व्हेन डिड द लास्ट मास एक्सटिंक्शन हैपन? Around 66 million years ago, 65 million years ago, 76 million, or 46 million? Again, was clearly mentioned in the passage, so you should be able to answer this. Mass extinction कब हुआ था last? It was around 66 million years ago in the Ice Age. Around 66 million years ago तभी डायनासोर्स वगैरह थे जो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए. What argument was given by the French naturalist Georges Cuvier to counter the argument of no extinction? Georges Cuvier ने ऐसी कौन सी बात बोली थी? ओके, लोग तो कह रहे थे एक्सटिंक्शन वाली बात तो कोई होती नहीं है, दूसरी जगह गए होंगे, बट उस बात पे जॉर्जेस कवियर का क्या आर्ग्यूमेंट था? इट्स अगेन क्लियरली मेंशन्ड इन द पैसेज इटसेल्फ. The correct answer is very good. See, if those huge beasts were still around, someone would have seen them. जॉर्जेस कवियर ने ये दलील दी थी, अगर वह इतने बड़े बड़े बीस्ट्स अगर जिंदा होते तो किसी न किसी ने तो उसे पक्का देखा होता अब तक. Which of the following is the antonym for the word extinction? Extinction का एंटोनिम क्या होगा? Vanishing, death, conservation, eradication. विलुप्त होने का सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम, एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? The correct answer is conservation. C is correct. Conservation मतलब किसी चीज को विलुप्त होने से रोकना, कंजर्व करना, बचाना. Okay, that is the antonym for the word extinction. Okay, now let's attempt a few one-word substitutions. Again, guys, कुछ क्वेश्चन सेट्स जैसे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जरूरी नहीं है हर सीजन में आपके सीडीएस के आएंगे ही आएंगे, बट ये भी नहीं कहा जा सकता कि आएंगे ही नहीं. बीच में कुछ सीजन्स में ये आए थे, तो यू नेवर नो. आपको कॉन्सेप्ट, आपको सभी हथियारों के साथ पूरे लैस होके जाना है. यू हैव टू प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग, सो दैट किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे क्रैक कर सको. इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आने के चांसेस हैं. तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बता रहा हूं. बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड. ऐसी एक मान्यता जिसमें लोग मानते हैं कि वॉर और वायलेंस सही चीज नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे? पेसिमिज्म, पैसिफिज्म, न्यूट्रलाइजेशन और नेचुरलाइजेशन. 4 ऑप्शंस क्या होना चाहिए बताओ. Okay, the correct answer for this particular question is pacifism. Okay, pacifism is absolutely right. The correct answer is B. Okay, इस ऐसी मान्यता जिसमें लोग सोचते हैं कि वॉर वगैरह और वायलेंस सही नहीं है, that is pacifism. Pessimism मतलब निराशावादी, looking at the negative side of things. Okay, that is pessimism. न्यूट्रलाइजेशन किस चीज को न्यूट्रल करना, नेचुरलाइजेशन किसी चीज को नेचुरल बना देना. सो प्रीटी सिंपल. ओके, अगला सवाल. द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन. किसी के द्वारा पहला जो भाषण दिया गया उसको आप क्या कहते हो? ट्रायल स्पीच, मैराथन स्पीच, इनॉग्रल स्पीच, मेडन स्पीच. 4 ऑप्शंस.
Okay, the correct answer is D. It's called the maiden speech. Maiden speech, the first speech delivered by a person, it's called the maiden speech. याद रखना, फर्स्ट को भी कई बार आप मेडन का प्रयोग करते हो इसके साथ। वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो कानून तोड़ता है। पेडेस्ट्रियन, एग्रेसर, पॉलिटिशियन, ट्रांसग्रेसर। क्या होना चाहिए बताइए। वन हु ब्रेक्स द लॉ इज एक्चुअली कॉल्ड द ट्रांसग्रेसर। इसे आप आउटलॉ बोल सकते हो, क्रिमिनल बोल सकते हो, परपेट्रेटर बोल सकते हो। ठीक है, देयर आर सेवरल वर्ड्स। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं। एग्रेसर इज वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले अटैक करता है उसे एग्रेसर कहते हैं। पॉलिटिशियन मतलब नेता, ऑलरेडी जानते हो। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एडिक्ट, बैकपाइपर, टीटॉटलर, अल्कोहलिक। One who doesn't take alcoholic drinks at all, what do you call such a person? The correct answer is indeed C. Teetotaler is right. One who doesn't take alcoholic drinks. Addict का मतलब आप जानते हो, जो कोई नशा करता है बहुत ज़्यादा। Bagpiper is a person who plays the bagpipe. Alcoholic, one who takes alcohol, is called an alcoholic. अगला, commencement of adjacent words with same letter. ट्रांसफर्ड एपिथेट, पन, ऑक्सीमोरॉन और अलिटरेशन। मतलब एक सेंटेंस में सारे वर्ड उस सेंटेंस के एक ही लेटर से शुरू हों, जैसे इस टाइप के सेंटेंस, शी सेल्स, सी शेल्स, ये सारे एस से ही शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद सेम लेटर, सभी का पहला लेटर एस है, तो इसको हम कहते हैं अलिटरेशन। डी इज करेक्ट, अलिटरेशन इज एब्सोल्युटली राइट। जिसने डी कहा सही थे, वेल डन। अगला सवाल, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, फिलैंथ्रोपी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी। Okay, the correct answer is study of ancient societies is archaeology. Absolutely right. Philanthropy is doing charitable work, working for the welfare of mankind is philanthropy. History is study of ancient monuments, structures, people, etc. Anthropology is study of evolution of mankind. Okay, mankind कैसे evolve किया, उन सब चीज़ों की पढ़ाई को आप कहते हो anthropology. ये शब्द बना है एंथ्रोपोस से। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, उससे बना है ये शब्द। ओके, अगला सवाल, अ जियोमेट्रिकल फिगर ऑफ 8 साइड्स, पैरेललोग्राम, ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन। व्हाट शुड बी द आंसर? Absolutely. Octa का मतलब होता है 8. So geometrical figure of 8 sides is called an octagon. Parallelogram, जिसके दो sides parallel हों, it's a parallelogram, like a square, a trapezium, a rectangle, ये सारे parallelogram हैं. Hexagon is a figure with 6 sides. Pentagon is a figure with 5 sides. Next, a person who abstains, ये तो already हो चुका था. Teetotaler, one who doesn't take alcoholic drinks is teetotaler. Abstainer, जो किसी चीज़ से दूर रहता है, but specifically alcohol से दूर रहने वाले को teetotaler कहते हैं.
ड्रंकर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा डिप्सोमैनियक, वन हु ड्रिंक्स अ लॉट। बूजर का मतलब भी वो भी जो बहुत शराब पीता है उसको ही बूजर कहते हैं। अब आते हैं, हम कुछ करेंगे क्लोज टेस्ट जिसे हम कहते हैं। क्लोज टेस्ट इज नथिंग बट अ पैसेज वेर यू हैव सेवरल ब्लैंक्स। अगर आप गौर करो तो ये एक पैसेज है जिसमें ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, देयर आर सेवरल ब्लैंक्स हियर। You have to identify which option is correct for each and every blank. ओके, सो यहाँ से पैसेज शुरू हो रहा है। सभी लोग पहले पैसेज को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। So start reading it everyone first. Start reading the passage. पढ़ लिया सभी ने? हैव यू रेड द पैराग्राफ? गाइस, क्लोज टेस्ट करने का तरीका यही है कि यू हैव टू रीड द पैसेज विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस. डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट look at the options. First read the passage without looking at the options and then you select the appropriate option. हाँ, प्रॉब्ली अंकित काफ़ी पहले कराया हो गया अभी प्रीवियस प्लेटफॉर्म में, तो अभी जो है मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल से आई ब्रिंग इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो उनके लिए तो ये नया नहीं है, बट कई लोग जो नए पहली बार आए उनके लिए नया है। ओके, सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग, आप ऑब्वियसली देखिए हो प्रीवियस प्लेटफॉर्म में भी मैं ज़्यादा वैरायटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाया करता था, वही चीज़ यहाँ पे भी करूँगा। Okay, it says after having slept for an hour, Bond decided to go out into the city and try to find his contact. After changing his suit, he carefully locked his room and stepped out of the hotel. No one was around, but he had walked only for a few minutes when it suddenly dashed to him that he was being dashed by someone. There was really no dash for it except a very slight dash of footsteps. He was now walking the main street, which was crowded people. He became extremely aware of the danger of the people threatening him. So pretty simple. पहले blank में क्या आना चाहिए? No one was around, but he had walked only a few minutes when it suddenly dashed to him. Felt, occurred, happened, refused. 4 options. क्या होना चाहिए बताओ? Suddenly occurred to him. B is absolutely right. If something is occurring to you का मतलब होता है कोई चीज आपको अचानक से स्ट्राइक करता है, आपके दिमाग में आता है, तब आप कहते हो it occurred. Okay, something occurred to me, something occurred to him, मतलब कोई चीज आपको अचानक से याद आता है, स्ट्राइक करता है. So B is right. Felt to him नहीं लिख सकते, happened, refused to him doesn't make sense. अगले ब्लैंक के लिए बताओ. That he was being dashed by someone, followed, shot, looked or asked. Simple one. क्या आंसर होना चाहिए इसका? He was being followed. The correct answer is A, guys. अचानक से उसको लगा बॉन्ड को कि उसका कोई पीछा कर रहा है. फॉलोड बाय समवन. देयर वाज रियली नो डैश फॉर इट एक्सेप्ट अ वेरी स्लाइट डैश ऑफ फुटस्टेप्स. रीजन, कॉज, एविडेंस और रिजल्ट. मीनिंग समझो. ट्राई टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ओनली देन कैन यू गेट टू द करेक्ट आंसर. इसलिए मैं कहता हूं अ लॉट ऑफ रीडिंग हैबिट्स. Okay, you need regular reading habits. This will help you in understanding the usage and selecting the appropriate word in specific blanks.
Okay, evidence is absolutely right. The correct answer for blank number 3. There was really no evidence for it. There was really no evidence for it. कोई इसको फॉलो कर रहा था, इसका कोई प्रमाण तो नहीं था, उसका कोई प्रूफ तो नहीं था, except a very slight dash of footsteps. Wait, sound, hurting or calculating. Simple one. What should be the answer for this one? क्या होना चाहिए बताइए? Okay, the correct answer to this one should be sound of. Very good. Sound of footsteps. Blank number 4. There was really no evidence for it except a very slight sound of footsteps. He was now walking dash the main street. He was now walking dash the main street. From, down, over or below. Okay, the correct answer is he was still walking down the main street. Walking down. Okay. Up and down. Walk up मतलब उस किसी तरफ जाना. Walk down मतलब वापस आना. Was walking down the main street which was crowded dash people. Crowded के साथ preposition क्या लगता है? अगर आपको इतना पता है तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. Which was crowded dash people. Okay, the correct answer is crowded with. Crowded, teamed, infested, filled, ये सब कुछ ऐसे synonyms हैं जिसके साथ हमेशा with का प्रयोग किया जाता है. Pretty simple. अब आते हैं कुछ spelling based errors में. It says in this section a word is spelled in 4 different ways. You have to identify which one is correct. Choose the alternative bearing the correct spelling from A, B, C or D. PDF will be provided to you. अवनीश ITBP पेपर में जो आपका आता है you get general arithmetic okay for 30 marks, general knowledge आएगा 25 marks का, general English आएगा 35 marks का और computer knowledge का भी कुछ questions होते हैं around 10 marks के अराउंड. So English में around 35 marks के question होते हैं आपके ITBP head constable exam में. ठीक है. Okay, the correct answer for this one is A, illustration. Illustration is nothing but a figure or a drawing. किसी प्रकार के figure या drawing को हम कहते हैं illustration. So yes, A is absolutely right. Next one. 4 options. Which do you think is the correct spelling here? Anbu Selvan, for the PDF, I have to just inquire whether the PDF is
uploaded in the descriptive section, in the description box below. If it's not uploaded, I'll see how I can provide you with the PDF. Just give me a day's time, because we all are pretty new to this particular platform, so थोड़ा सा टाइम लगता है उसके साथ रूबरू होने के लिए, थोड़ा सा वेल वर्स्ड होने के लिए. So give me up till tomorrow. I'll gradually clarify things to you, don't worry. Okay, the correct spelling is D, tenacious. Tenacious means a strong-willed or a determined person. One who is strong-willed or determined is called a tenacious person. So D is correct. अगला सवाल, which do you think is the correct spelling here? चारों में से correct spelling बताना है आपको. Okay, the correct answer is D, veteran. Veteran is actually an expert. Veteran generally एक expert को कहते हैं किसी specific field में. Now, retired army person or people who working in the army, उनको भी veterans कहा जाता है. In the any of the forces for that matter, it could be Navy, Air Force or army. उसको भी veteran कहा जाता है. But basically veteran का मतलब होता है one who is extremely skilled or one who is an expert in his particular field, his or her particular field. Okay, अगला सवाल, कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है इन चारों में से? Okay, the correct spelling is yes, C, conscientious is correct. CONSCIENTIOUS. Conscientious का मतलब होता है driven by conscience, being very honest, listening to one's conscience is a conscientious person. Correct spelling इसका बताओ. Anbuselvan, I already told you, give me a couple of days, beta. I will inquire and let you know how I can provide you with the PDF. Okay, the correct spelling is A, penitentiary. A is absolutely right. Penitentiary is nothing but a prison, a place where perpetrators or outlaws or criminals are sent, okay, for as a punishment. उसको हम penitentiary कहते हैं. These are big prisons are called penitentiaries. Okay, so A is correct. Next, 4 options. What should be the correct spelling for out of these 4? Okay, the correct spelling is A, allegiance. Allegiance का मतलब होता है loyalty, वफादारी जिसे कहा जाता है. Loyalty या वफादारी, that is allegiance. Sorry, the correct answer should be B, guys, not A. A-N-C होगा, E-N-C नहीं होगा. Sorry, my bad. The correct answer is A-L-L-E-G-I-A-N-C-E. मैं नोटिस नहीं किया था, यहाँ पे E लिखा हुआ था. Correct answer is this one. B is correct. Okay. Next question. What should be the correct spelling here? बताओ. Okay, the correct spelling is B indeed. अगर आप malls में या आपने market वगैरह में गए होगे तो must have noticed. Okay guys, कितने लोगों की आदत है when you are out in the market, you are out on the streets or you are anywhere for that matter,
You have the habit of actually reading what is written. जैसे आप रोड पे जा रहे हो, प्रॉब्ली ऑटो में या रिक्शा में या बस में, you keep reading all those hoardings and boards and billboards and the names of shops, etc. If you have this habit, let me tell you, if you have people who have this habit have better spelling skills compared to others. So अगर आपको ये रीडिंग हैबिट है, चीज़ों को पढ़ने की आदत है, अगर चलते हुए चलते फिरते, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा. अगर आपने कभी बुटीक वगैरह के स्टोर्स का स्पेलिंग भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप गलती नहीं करते. बुटीक इज व्हाट? बुटीक इज नथिंग बट अ स्टोर फॉर फैशनेबल क्लोथ्स एंड फैशनेबल एक्सेसरीज. ओके, एक दुकान, शॉप या स्टोर बोल सकते हो फॉर फैशनेबल क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज. इट्स कॉल्ड अ बुटीक. So B is correct. B-O-U-T-I-Q-U-E. That's the correct spelling. Next one. 4 options. What should be the correct one? Ankit, I will be bringing vocab sessions also. Okay, vocab के भी sessions. अभी तो आज सेशन शुरू ही किया है, practice sets. तो I will be bringing a variety of practice sets going forward. Do not worry at all. Okay, the correct answer is indeed B. Facsimile is absolutely right. Facsimile is nothing but an exact copy. कंपनीज में फैक्स मशीन होता है ना, फैक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फैक्सिमाइल. सेंड मी अ फैक्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट, मतलब सेंड मी द एग्जैक्ट कॉपी. वहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करते हैं किसी दूसरे जगह से, और मुझे इलेक्ट्रॉनिकली उसका प्रिंट आउट निकल जाता है. So facsimile is nothing but an exact copy of a document. Next, 4 options. Which do you think should be the correct spelling? Okay, the correct answer is indeed C. B-U-O-Y-A-N-T. Buoyant is nothing but staying afloat. जो डूबे ना और ऊपर ही रहे पानी के, staying afloat is called buoyant. buoyant पानी के सेंस में ही नहीं, buoyant इकोनॉमी भी बोला जाता है. ऐसी इकोनॉमी जो रिसेशन या मंदी में भी डूबे ना, वो अपने आप को सस्टेन कर ले. तो staying afloat, पानी के ऊपर रहना या किसी चीज का असर ना पड़ना, दैट इज ऑल्सो बीइंग बॉयंट. ऊपर रहना, किसी चीज से इम्पैक्ट, किसी चीज से कोई इम्पैक्ट ना पड़ना, दैट इज ऑल्सो बॉयंट. ऑलराइट, लेट्स अटेम्प्ट अ फ्यू एक्टिव पैसिव वॉइस क्वेश्चंस. आपको सेंटेंस को एक्टिव में है तो पैसिव चेंज करना है, पैसिव में है तो एक्टिव चेंज करना है. पहला क्वेश्चन है समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली. इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए? Someone pulled the bull violently. Obviously आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में ये बन जाता है was were प्लस V3. was were प्लस V3. So someone pulled the bull violently का पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए? Okay, the correct answer is the bull was pulled. Violently by someone लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है वॉइस का. इस सेंटेंस में जब भी someone, somebody, something, no one, nobody, nothing ये सब आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने की जरूरत नहीं है. The bull was pulled violently, it is understood. किसी ने ही खींचा होगा, तो by someone is not needed. So D is right. Next, a lion does not eat grass, however hungry he may be. What should be the indirect speech, passive voice? Okay, the correct answer is yes, A. Grass is not eaten by a lion, however hungry he may be. Being तो आएगा ही नहीं ना, ये तो कंटिन्यूस टेंस में आता है. ग्रास इज ईटन नॉट बाय अ लायन, यहाँ पे स्ट्रक्चर गलत है. अगेन यहाँ बीइंग आ रहा है तो ये भी गलत है. बीइंग इज ऑलवेज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, कैन बी यूज्ड इन द एक्टिव, नहीं, जनरली पैसिव वॉइस में ही आएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह पे.
बट वो कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए. पैसिव वॉइस कंटिन्यूस टेंस. Present continuous, past continuous, future continuous. Next one. Thick clouds have overcast the sky. What should be the passive? Thick clouds have overcast the sky. Okay, the correct answer is A. The sky has been overcast by thick clouds. Okay, have overcast. Now overcast का थर्ड फॉर्म भी overcast है. जैसे put का putted नहीं होता past में या past participle में, वैसे overcast भी past या past participle में ed नहीं लगाते. So has have plus v3 changes to has have plus been plus v3. So A is correct. यहाँ पे casted लिखा है इसलिए गलत है B. Next, a fresh batch of eggs was collected by the farmer's wife. I told you why not B, अंकित, प्रियंका, क्योंकि वहां overcasted लिखा था. Overcast put के तरह या cut के तरह ऐसा शब्द है जिसमें ed नहीं लगाते हम past tense में. A fresh batch of eggs was collected, passive voice. Direct में क्या हो जाएगा? Collected. The farmer's wife collected. Was collected तो होगा नहीं, had collected भी नहीं होगा. Farmer's wife collected the fresh or a fresh. Question में क्या लिखा है? A fresh. So you go with D. The farmer's wife collected a fresh batch of eggs. D is correct. अगला सवाल. Who asked you to drop this letter? Who asked you to draft this letter? अगर एक्टिव वॉइस में हु आए तो पैसिव वॉइस में याद रखना हमेशा बाय हुम होना चाहिए. एक्टिव वॉइस में हु है तो पैसिव वॉइस में बाय हुम. सो हु आस्क्ड यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर? करेक्ट आंसर इज सी. वेरी गुड. बाय हुम वर यू आस्क्ड टू ड्राफ्ट दिस लेटर इज राइट. सी. क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे. यू वर आज नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल? व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल? व्हाट शुड बी द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दिस वन? Why was the garden wall broken by her is correct. C is correct. Don't speak until someone speaks to you. Don't speak until someone speaks to you. इसका indirect speech. क्या होना चाहिए? डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू. स्पीक्स का होगा इज एम आर प्लस v3. सो डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू. ए इज एब्सोल्युटली राइट. द पीपल कुडंट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम. क्या होना चाहिए? इनडायरेक्ट स्पीच. सॉरी, passive voice. Passive voice for this one. The correct answer is A. I couldn't be moved to the hospital and was operated on at home by the doctor. Simple one. People speak English all over the world. आसान होना चाहिए. What should be the passive voice?
The correct answer is English is spoken all over the world by the people. लिखने की जरूरत नहीं है. Again, it is understood. English spoken all over the world is right. Cocoa is better when it is tasted. Cocoa का spelling गलत है. COCOA. Cocoa is bitter when it is tasted. का डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? Okay, the correct answer is cocoa tastes bitter. B is correct. Cocoa tastes bitter. B is absolutely right. Okay, let's attempt a few idioms and phrases वाले questions जरा सा देखेंगे. Cry for the moon. इस idiom का meaning क्या होगा? Cry for the moon का meaning. Cry for the moon. It actually means to ask for what is impossible. किसी impossible चीज के लिए wish करना, that is crying for the moon. Wish for something impossible is cry for the moon. Very good. Okay, if someone is in hot water, what does it mean? Hot weather, cold war between two groups, in trouble or disgrace, or in hustle. अंकित, यहाँ पे फ्री सेशन बेटा एटलीस्ट 1 घंटे का तो मैं करवाऊंगा ही. जैसे आज तो ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को आए हैं अभी, तो ऐसे ही आपके अभी 2 घंटे तो मैंने यूट्यूब में करवाए. ये पूरे हफ्ते वैसे ही कराऊंगा. अगले हफ्ते से मैंने प्लान किया है कि 1 घंटे ऐप पर, 1 घंटे यूट्यूब पे मैं सेशंस करवाऊंगा. ऐप पे इट विल बी लाइक एन इंटरैक्टिव क्विज एज यू ऑलरेडी नो. तो वहाँ पे यू कैन स्टिल फिगर आउट, आइडेंटिफाई how much you know and how well you are prepared. हाँ, 7 to 9 इस हफ्ते फ्राइडे तक 7 to 9 रखेंगे. इन हॉट वाटर एक्चुअली मीन्स इन ट्रबल और डिस्ग्रेस. बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, परेशानी में होना, उसे हम कहते हैं इन हॉट वाटर. ओके, टर्न अ डेफ ईयर. अनसुना करना जिसे कहते हैं. हेल्पिंग अ डेफ पर्सन, क्रिएटिंग ट्रबल फॉर समवन, पुशिंग समवन, रिफ्यूज टू लिसन और रिस्पॉन्ड टू स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट. टर्न अ डेफ ईयर का क्या मतलब होगा बताओ? टर्निंग अ डेफ ईयर. Okay, it basically means refuse to listen or respond to a statement or request. अनसुना करना, that is turn a deaf ear. ऐसा ही होता है टर्न अ ब्लाइंड आई. टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब अनदेखा करना. टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना करना. नेक्स्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स. In the past 1 year, he has grown in leaps and bounds. What does it mean? Okay, which means what with startlingly rapid progress. तेजी से progress करना. That is by leaps and bounds. With startlingly rapid progress. A is absolutely right. Okay, who is a big gun? A trustworthy friend, a frightful enemy, a very important person, or a loathed person. Big gun किसे कहते हो? Who's a big gun? Okay, the correct answer is a very important person. His father is a big gun, which means he's a VIP or VVIP. That's called a big gun. A left-handed compliment, a hidden insult, worthy compliment, to argue or destroy the facts. What is a left-handed compliment?
लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए, विच इज अ हिडन इंसल्ट. ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. या अंकित बोल सकते हो, द अदानी एम्पायर हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स, विच मीन्स बहुत तेजी से ग्रो किया. बिल्कुल सही सेंटेंस है. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब वेरी रेयरली, वेरी ऑफन, फ्रीक्वेंटली और वंस इन 5 days. अगर मैं आपसे पूछता हूं डू यू वॉच मूवीज, आप कहते हो या आई डू वंस इन अ ब्लू मून. करेक्ट आंसर इज वेरी रेयरली, कभी कभी. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स वेरी रेयरली. यस, ए इज एब्सोल्युटली राइट. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब raining frequently, raining rarely, participating in a race competition, raining very heavily. Raining cats and dogs means raining very heavily. D is correct. मूसलाधार बारिश, भारी वर्षा, that is raining cats and dogs. Alright, stab someone in the back, befriend someone, betray someone, kill someone, announce privately. हाँ, कल से काफ़ी जगहों पे एक्चुअली में there's a western disturbance going on. So several parts of the country are witnessing heavy rainfall. So it is raining cats and dogs in several parts of the country owing to the western disturbance. Okay, ऐसे sentences बना सकते हो. और stab someone in the back basically means to betray someone, किसी को धोखा देना, दगाबाजी करना. Okay, that is stabbing someone. Stab का मतलब ही होता है भोंकना, चाकू भोंकना. That is stabbing. नमन कह रहे हैं सर इधर तो एक हफ्ते से लगी है बारिश. नमन कौन से सिटी में हो बेटा? कुछ सिटीज में जैसे मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा बारिश है, बट यहाँ पे वेर आई एम इन एनसीआर इट्स बीन रेनिंग फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेज. पिछले 2 दिनों से तो हो ही रहा है. दैट टू बीच बीच में काफ़ी हैवी हो जाता है, बट हाँ मतलब काइंड ऑफ इट्स ऑन द हायर साइड. ओके, ट्रबल्ड वाटर्स, flooded area, congested area, difficult situation, time or fatal situation. Palampur, Himachal Pradesh. Wow, that's a beautiful place, Naman. You're lucky to be in such a place. That's good. I guess snowfall भी हो रहा होगा higher reaches में. लोअर रीचेस में तो अभी हिल्स में नहीं हो रहा, लेकिन हायर रीचेस में अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बर्फबारी भी हुई होगी. Troubled waters actually means a difficult situation or time. That is troubled waters. C is correct. एक कहावत या आइडियम होता है to fish in troubled waters. Fish in troubled waters मतलब दूसरों के नुकसान से अपना फायदा देखना. That is fishing in troubled waters. Okay. Bait the hook to shoot the fish. Bait the hook to shoot the fish का मतलब to kill an enemy, to make a friend, look at things from other person's point of view, to understand a problem. Bait the hook to shoot the fish. What does it mean? Bait the hook to shoot the fish का एक्चुअली में मतलब होता है दूसरे के नजरिए से देखना. To look at things from other person's point of view. C is correct. What is a vexed question? Controversial question, complex person, question which is easy to answer, or a tough question paper. Vexed question किसे कहते हैं? What is a vexed question? Vexed question is actually a controversial issue. विवादित कोई issue है जिसमें controversy चल रहा है, that is a vexed question. What's a blessing in disguise? 4 options. Read it and answer.
A blessing in disguise is something that seemed bad at first but turned out to be good. शुरुआत में जो लग रहा था कि खराब है, असल में उससे कोई फायदा हो गया. That is a blessing in disguise. Costs an arm and a leg. His smartphone costs an arm and a leg. What does it mean? If something is costing an arm and a leg, it means that it is extremely expensive. बहुत ही ज़्यादा महंगा हो तो उसे हम कहते हैं costing an arm and a leg. Simple. If something is set in stone, what does it mean? Very complicated, being harsh on somebody, setting difficult goals, so very difficult to change. Something is set in stone, it means that is very difficult to change. In this company, the policies are set in stone. इस company में जो policies हैं, those are set in stone, which means fixed हैं. It is very difficult to change. थोड़ा सा vocab section में आते हैं. Antonym आपको बताना है, opposite of this particular word. The strike was instigated by the ambitious union president who wanted to get his name into the newspapers. Instigated का एंटोनिम क्या होगा? Protract, palliate, halt और marshal. 4 options. Instigate का मतलब होता है भड़काना. So एंटोनिम होगा C, which is halt. मार्शल मतलब है किसी चीज़ को सपोर्ट करना. पैलिएट, प्रोट्रैक्ट, ये सारे एक तरह से सिनोनिम्स हो जाएंगे. हॉल्ट शुड बी द एंटोनिम विच मीन्स रोकना. अगला अगेन ऑपोजिट बताना है. दे पास्ड ऑन लॉट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सेंसिटिव का एंटोनिम रिगरस, नम, मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी. सेंसिटिव का मतलब तो आप जानते हो, बहुत ही ज़्यादा नाजुक. ओके, और जिसको आसानी से इफेक्ट हो जाए, दैट सेंसिटिव. रिगरस, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. नम्ब, जिसमें किसी भी प्रकार का फीलिंग ना हो. मॉडेस्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ. ह्यूमिलिटी अगेन घमंड ना हो, अहंकार ना हो. तो सेंसिटिव का एंटोनिम होगा नम्ब, नॉट फीलिंग एनीथिंग, दैट इज नम्ब. सो द करेक्ट आंसर, एंटोनिम ऑफ सेंसिटिव शुड बी बी. नम्ब इज करेक्ट. अगला सवाल. वी विश टू डेफर आवर डिसीजन अंटिल नेक्स्ट वीक. डेफर का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है. अनाउंस, पोस्टपोन, बाइफरकेट, कन्विंस. डेफर का मतलब किसी चीज को. डेफर्ड पेमेंट्स क्या होता है? लेट पेमेंट्स. सो किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, दैट इज डेफर. अनाउंस का मतलब तो आप जानते हो, बाइफरकेट मीन्स टू डिवाइड. कन्विंस मतलब मनाना किसी को, दैट इज कन्विंस. Okay, nearest in meaning बताना है. The increasing number of candidates, the task became more daunting. Daunting का synonym, delightful, pleasing, supportive और intimidating. और भी ज़्यादा जब कैंडिडेट्स बढ़ने लगे, टास्क और भी ज़्यादा daunting हो गया, एक प्रकार से थ्रेटनिंग, डरावना हो गया कि कैसे इसको पूरा करें. सो synonym अगर आप देखोगे तो D, intimidating, D is correct. Delightful means happy, pleasing means satisfying, supportive you already know. Next, the only way to become boundless is to destroy individuality. Boundless का synonym, narrow, shallow, immense or restricted. 4 options. Boundless. As the name suggests, boundless means that doesn't have any boundaries, that is boundless. सो सिनोनिम अगर आप देखोगे, द करेक्ट आंसर इज इमेंस, बहुत ही ज़्यादा, जिसका कोई सीमा न हो. नैरो मतलब संकरा, शैलो मतलब जो गहरा नहीं है बिल्कुल, रेस्ट्रिक्टेड जो कंट्रोल्ड है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड. तो सिनोनिम बाउंडलेस का होगा इमेंस. अगला क्वेश्चन है, द मंडेन टास्क ऑफ सेटिंग द टेबल कैन बी फन ऑन हॉलीडेज. मंडेन का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है. मोनोटोनस, एक्साइटिंग, फेमिलियर और अनसर्टन. Now mundane का मतलब होता है समथिंग विच इज एक्सट्रीमली बोरिंग, दैट इज मंडेन.
सो सिनोनिम क्या होगा? मोनोटोनस, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्साइटिंग इसका एंटोनिम हो सकता है। फेमिलियर, दैट विच इज नोन, जिससे आप रूबरू हो। अनसर्टेन का मतलब दैट विच यू आर नॉट श्योर ऑफ। ओके, ही वॉज अ मैन केपेबल ऑफ मैग्नानिमस जेस्चर्स। मैग्नानिमस का ऑपोजिट बताना है। जेनरस, सेल्फिश, विटी और मॉडरेट। मैग्नानिमस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दयालु हो, जो लोगों का मदद करे ज़्यादा से ज़्यादा, उसे मैग्नानिमस कहते हैं। तो अगर ऑपोजिट बताना है तो ऑपोजिट इसका होगा सेल्फिश, जो अपने बारे में ही सोचे, लोगों के बारे में न सोचे, स्वार्थी। जेनरस इसका हो जाएगा सिनोनिम। विटी मतलब हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके, टू क्विकली एक्ट और आंसर। मॉडरेट का मतलब नहीं बहुत कम, नहीं बहुत ज़्यादा। अगला आपको ऑपोजिट बताना है। देयर इज कंसिडरेबल एंग्जाइटी अमंग स्टाफ अबाउट जॉब लॉसेस। एंग्जाइटी का एंटोनिम कॉन्शियसनेस, अप्रीहेंशन, कंसर्न, सेरेनिटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है बेचैनी होना। सो बेचैनी का एंटोनिम होगा बहुत ही ज्यादा काम, पीसफुल होना। तो एंटोनिम शुड बी सेरेनिटी, डी। इस चीज की चिंता न होना, चिंता होना तो एंग्जाइटी। सो एम्प्रीहेंशन का मतलब होता है एक तरह से इसी का सिनोनिम हो जाएगा कि चीज के बारे में एक प्रकार का डर होना, कैसे होगा क्या नहीं होगा। कंसर्न मतलब यू ऑलरेडी नो, किसी चीज के बारे में एक प्रकार से एक फीलिंग रखना, दैट इज हैविंग अ कंसर्न अबाउट समथिंग। कॉन्शियसनेस, टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, दैट इज कॉन्शियसनेस, होश में होना। ओके, गैरुलस पीपल मेक ग्रेट टॉक शो होस्ट। गैरुलस का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। टैसिटर्न, टॉकेटिव, साइलेंट और रिजर्व। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता हो उसको गैरुलस कहते हैं। तो सिनोनिम होगा आपका टॉकेटिव। टैसिटर्न इसका एंटोनिम हो जाता है विच इज साइलेंट, जो ज्यादा बात नहीं करे। रिजर्व्ड भी इसका एंटोनिम है, साइलेंट भी इसका एंटोनिम है। द सिनोनिम ऑफ गैरुलस विल बी टॉकेटिव। और एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं लोक्वेशियस, ये क्यू है, ठीक है। लोक्वेशियस इसका भी मतलब होता है बातूनी। एक्सट्रोवर्ट भी बोला जा सकता है, वन हु टॉक्स अ लॉट। अगला वर्ड है द एस्पेक्ट्स ऑफ योगा आर एकिन टू फिजियोथेरेपी। एकिन का ऑपोजिट बताना है। सिमिलर, इक्विवेलेंट, होमोजेनियस, अनलाइक। तो एकिन का मतलब होता है एक जैसा होना। तो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस तो इसके सिनोनिम हो गए। आपको बताना है एंटोनिम। सो एंटोनिम होगा डी विच इज अनलाइक। फिजियो नहीं हो, साइकोथेरेपी है। एस्पेक्ट्स ऑफ योगा आर एकिन टू साइकोथेरेपी मीन्स योगा के जो एस्पेक्ट्स हैं वो साइकोथेरेपी की तरह हैं, सिमिलर हैं, इक्विवेलेंट हैं, होमोजीनियस हैं और एकिन हैं। सो एंटोनिम क्या होगा? अनलाइक, डी इज करेक्ट। ठीक है जी। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ द डे। उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। डू लाइक द सेशन इफ यू लाइक्ड इट। कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा एंड हाउ डू यू वांट मी टू इम्प्रूव द सेशन, ये भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सॉरी। एंड आई विल बी ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, रेगुलरली लेके आता रहूँगा। जैसे मैंने बोला 7 to 9 ये होगा इस हफ्ते में। ओके, डू लाइक द सेशन इफ यू लाइक्ड इट, कमेंट करके बताइए एंड बी रेगुलर इन सच सेशंस। आई विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ वैरायटी, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके सीडीएस एग्जाम्स के पहले। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट अंकित। बी रेगुलर इन सच सेशंस एंड आई विल सी यू टुमारो। कोई डाउट्स क्वेरीज होगा वो भी लेके आइए, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू इट येट। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस अबाउट सच सेशंस एज वेल। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।